Good morning, children. Children, in this video, we are going to study about the types of germination. But before starting with the types of germination, we will study the two most important part present in the seed. The first one is epicotyl and the second one is hypocotyl. Let us see what are these and the differences between them. So the region of the axis between the point of attachment of the cotyledon. The region of the axis means the embryonal axis. So the region of the embryonal axis between the point of attachment of cotyledon and the plumule is called as epicotyl, whereas the region of the axis below the cotyledon is called hypocotyl. Now let us see this with the help of this picture. You can see here that this seed has germinated, and here you can see that these are the two cotyledons. Now the embryo, that is the embryonal axis present in a dicot seed, is developed and it is forming a plant here. The plumule forms the shoot system, whereas the radicle forms the root system. So the children, here the region of the embryonal axis above the cotyledon, this part is epicotyl, whereas the region of the axis below the cotyledon is called as hypocotyl. So these are the two regions, epicotyl and hypocotyl. I hope the difference is clear between these two terms. Now both epicotyl and hypocotyl of a seed never elongate together during germination. Means during the process of germination, epicotyl and hypocotyl of a seed do not elongate together. Either the epicotyl will elongate or the hypocotyl will elongate. Now children, let's see the two types of germination, hypogeal germination and epigeal germination. Let's start with hypogeal germination. In hypogeal germination, the epicotyl elongates. Children, remember that in hypo, first of all let me tell you the meaning of this term. Hypo means below and geal means earth. So in this type of germination, the cotyledons remain under the soil or on the soil. And in this type of germination, the epicotyl elongates. Whereas if it is compared to epigeal germination, so in epigeal germination, hypocotyl elongates and the cotyledons come above the ground. So children, the conditions are just opposite in hypogeal and epigeal germination. So you have to learn in the same way. Now let's see what happens during germination. The seeds absorb water. After absorbing the water, it swells. Now because it swells, the testa softens and it bursts. Radicle emerges, it grows downward and forms the root system, whereas the plumule grows upward and forms the shoot system. Let us understand hypogeal germination with the help of this picture. Here you can see this is a seed, and from this seed, when the seed is going to absorb the water, the seed coat will swell and it will burst, and you can see that radicle is emerging. Now this radicle is forming the root system. Then you can see here that here the epicotyl is elongating and the plumule has arised and epicotyl is elongating. Plumule comes upward pushing the soil and then the true leaves are formed. So this is how the hypogeal germination occurs. Now the most important thing you can observe here is cotyledon is present below the soil surface. It hasn't come upward. So children, this was about hypogeal germination. Again, in hypogeal germination, epicotyl elongates and cotyledons remain under the soil. Let's see some more points about hypogeal germination. In the earlier stage of development, the plumule is arched. Arched means like this. So this protects the young shoot from injury, because if it will be straight, this point may be damaged when it will emerge from the soil. So that's why the plumule remain arched. So the young shoot, this protects the young shoot, this young part, that is the plumule, from injury when it emerges from the soil.
Now children, the cotyledons supply the food to the developing embryo, you all know this. Now the cotyledons supply the food till the seedling is able to exist independently, till the complete plant forms and perform the process of photosynthesis. Now later the cotyledons either wither or either they shrivel up, they dry and then they fall off. Okay, now cotyledons remain underground and the germination is hypogeal germination. Now children, let's see about epigeal germination. Epigeal is made up of two words. Epi means above and geal means earth. So in this type of germination, the cotyledon comes above the ground and the hypocotyl elongates. Now let's see how the hypocotyl elongates. In this case also the seed will absorb water and it will swell. The radicle will go downward and will form the root system. The arched hypocotyl grows, forming an arch above the soil. It then straightens, bringing the cotyledon above the soil. Now children, let us see this with the help of a picture. Here you can see that this is a seed and the seed coat bursts and the radicle emerges. Now children, the radicle is forming the root system. But here you can see one more thing, that this hypocotyl is indicated with green color. You can see this part. This is the green part, the part of the axis present below the cotyledon. This is hypocotyl. And I have told you, in case of epigeal germination, hypocotyl elongates. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, hypocotyl is elongating. You can see the size of hypocotyl here now, green color, and this cotyledon part is also coming upward. Now as the cotyledon is pushed above the ground, so this is epigeal germination, and then you can see that these are the two cotyledons and this part is epicotyl. So in this case you have observed that hypocotyl is elongating and cotyledon is pushed above the ground. So this type of germination is called as epigeal germination. Now here children, the cotyledon becomes the first green leaves. They soon fall off as the new foliage leaves arises. So children, this was about the hypogeal and epigeal germination. Let's see hypogeal germination in maize grain. You have studied about the structure of maize grain. I have explained it to you in a video. And here we are going to observe that how the germination occurs in maize grain. Children, the grain imbibes water and it swells considerably. After that, the radicle pierces the protective covering present over it. And you all know that the protective covering is called as coleorhiza. So the radicle pierces the coleorhiza and the fruit wall and it grows downwards. So this one is the fruit wall, and inside that fruit, inside the grain, the coleorhiza is present. Okay? Then it is forming the root system. After that, what we are going to observe is that this root system dies off soon. Now the new roots develop from the basal portion of the stem, from this part of the stem, and then the new roots arises. So this is how the germination occurs in maize. Now the plumule also pierces from the coleoptile, from the protective sheath. It grows straight and then forms the main plant. Now the children, cotyledon or the scutellum absorbs food from the endosperm until it is exhausted, and hypocotyl does not elongate here because this is hypogeal germination. So this type of germination is called as hypogeal germination. Here we can compare the hypogeal and epigeal germination. So let us revise what I have explained you in this video. मैंने आपको इस वीडियो में ये बताया कि हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन, लेकिन टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन को पढ़ने से पहले हम दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म पढ़ते हैं, वो है एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल. आपने बीन सीड का स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो बीन सीड के स्ट्रक्चर से ही कंपेयर करके मैं आपको एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल बताऊंगी. पहले तो ये अगर बीन सीड है और ये हो गया हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस, तो कहा जाता है कि ये हम 2D व्यू देख रहे हैं ना. जब ओपन करेंगे तो ये पार्ट थोड़ा सा नीचे की तरफ हमें दिखेगा. ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि एक्सिस का वो पार्ट
जो कॉटलिडन के नीचे प्रेजेंट होगा वो हो जाएगा हाइपोकोटाइल, और एक्सेस का वो पार्ट जो कॉटलिडन के पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से ऊपर प्रेजेंट होगा प्लूम्यूल तक का, वो हो जाता है एपिकोटाइल। यानी कि ऊपर वाला पार्ट एपिकोटाइल और नीचे वाला पार्ट हाइपोकोटाइल। इसके बाद यहाँ पर इस डायग्राम से बहुत क्लियरली ये समझ में आ जाएगा कि अगर ये दोनों कॉटलिडन्स हैं तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो है कॉटलिडन्स का, इससे ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा एपिकोटाइल और नीचे वाला पार्ट हो जाएगा हाइपोकोटाइल। अब आगे बढ़ते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप जर्मिनेशन के टाइप्स पढ़ेंगे ना तो उसमें आप ये देखेंगे कि एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल सीड का कभी भी एक साथ इलोंगेट नहीं करता है। या तो एपिकोटाइल इलोंगेट करता है या फिर हाइपोकोटाइल इलोंगेट करता है। अब बात करते हैं हाइपोजियल और एपिजियल जर्मिनेशन की। देखिए, हाइपोजियल जर्मिनेशन क्या होता है? हाइपोजियल दो वर्ड का बना है। हाइपो का मतलब होता है बिलो और जियल का मतलब होता है अर्थ। तो इस तरह के जर्मिनेशन में कॉटलिडन सॉइल के नीचे रहता है या सॉइल के सरफेस पर रह जाता है, ऊपर नहीं आता पूरी तरह से। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसमें एपिकोटाइल इलोंगेट करता है। तो अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाता है हाइपोजियल और एपिजियल जर्मिनेशन में, तो यू कैन राइट कि इन हाइपोजियल जर्मिनेशन एपिकोटाइल इलोंगेट्स, जस्ट ऑपोजिट। हाइपोजियल में कौन इलोंगेट करेगा? एपिकोटाइल। चलिए अब इसको समझते हैं एक पिक्चर से, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी थ्योरी पार्ट देखेंगे कि सीड वाटर को अब्जॉर्ब करेगा और वाटर अब्जॉर्ब करने के बाद वो स्वेल कर जाएगा। स्वेल करेगा यानी कि टेस्टा सॉफ्ट हो जाएगा और बर्स्ट कर जाएगा। जैसे ही टेस्टा बर्स्ट करेगा, रेडिकल बाहर आएगा, नीचे की तरफ जाएगा और रूट सिस्टम बनाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि एम्ब्रियो में रेडिकल क्या बनाता है? रूट सिस्टम। और प्लूम्यूल भी निकलेगा, प्लूम्यूल क्या बनाएगा? शूट सिस्टम। इसको एक डायग्राम से समझिए। ये हो गया सीड, पानी अब्जॉर्ब किया, स्वेल किया, बर्स्ट किया, रेडिकल नीचे की तरफ आ गया। अब ये रेडिकल क्या बना रहा है? रूट सिस्टम, और यहीं पर प्लूम्यूल इलोंगेट हो रहा है। और आपको मालूम है कि ये वाला पार्ट एपिकोटाइल है और यही एपिकोटाइल क्या हो रहा है? इलोंगेट कर रहा है यहाँ पर। हाइपोकोटाइल यहाँ पर इलोंगेट नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा जर्मिनेशन? किस तरीके का? हाइपोजियल। इसमें कॉटलिडन यहीं अंडर द सॉइल प्रेजेंट है। सो दिस वाज अबाउट हाइपोजियल जर्मिनेशन। अच्छा, एक और चीज़ कि जो अर्लियर स्टेज में जब डेवलपमेंट होता है तो प्लूम्यूल जो होता है वो आर्च्ड रहता है इस तरह से। क्यों आर्च्ड रहता है? जैसे कि जब वो सॉइल के सरफेस के ऊपर जाए तो यहाँ पर ये वाला पार्ट इंजर्ड ना हो जाए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, वेट, ऐसा भी हो सकता है कि अगर प्लूम्यूल स्ट्रेट जाएगा सॉइल के सरफेस के ऊपर तो ये वाला पार्ट इंजर्ड हो जाए और ये रिपेयर ना हो पाए। अब आगे देखते हैं कि कॉटलिडन क्या करता है? फूड को सप्लाई करता है सीडलिंग को तब तक जब तक सीडलिंग पूरे प्लांट में कन्वर्ट नहीं हो जाता, उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। उसके बाद कॉटलिडन शिवल कर जाता है, गिर जाता है। कॉटलिडन जो है वो अंडरग्राउंड रहता है और इस जर्मिनेशन को हम कहते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। अब बात करेंगे एपिजियल जर्मिनेशन की। एपिजियल जर्मिनेशन एक ऐसा जर्मिनेशन है जिसमें हाइपोकोटाइल इलोंगेट करेगा, जस्ट ऑपोजिट, और कॉटलिडन क्या होगा? सॉइल के ऊपर आ जाएगा। एपी का मतलब अबव, जीएल का मतलब अर्थ। तो सीड क्या करता है? वाटर अब्जॉर्ब करता है और स्वेल कर जाता है। रेडिकल डाउन नीचे तरफ जाता है और रूट सिस्टम बनाता है। और जो आर्च्ड हाइपोकोटाइल है वो क्या करता है? ग्रोज, वो फॉर्मिंग एन आर्च अबव द सॉइल, और उसके बाद वो पूरा स्ट्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से कॉटलिडन ऊपर की तरफ आ जाते हैं। अब मैं आपको इसको एक पिक्चर से समझाऊंगी। यहाँ पर देखते हैं, ये एक सीड हो गया, इससे रेडिकल इमर्ज कर रहा है। और अब आप ये ग्रीन वाला जो पार्ट है ये हाइपोकोटाइल है, यहाँ पर ये आप ऊपर ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो अब आप देखेंगे नेक्स्ट पिक्चर में कि हाइपोकोटाइल इलोंगेट कर रहा है। तो जैसे जैसे ये पार्ट इलोंगेट कर रहा है, बढ़ रहा है, ये अपनी तरफ से कॉटलिडन को ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो वो ऊपर की तरफ पुश हो रहा है। और पुश होने के बाद पूरा का पूरा कॉटलिडन ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ आ गया। और देखिए आर्च्ड कंडीशन में ही बाहर आया। उसके बाद क्या हो रहा है? ये कॉटलिडन ओपन हुआ और इसके अंदर से जो हमारा प्लूम्यूल वाला पार्ट था उसने हमारा ट्रू लीव्स बनाए, क्योंकि यहाँ पर कॉटलिडन जो लीव्स बना रहा है दोज आर फॉल्स लीव्स, उसको ट्रू लीव्स नहीं कहते हैं। तो ये बाद में गिर जाएगा और हमारी ट्रू लीव्स किससे बनती हैं? हमेशा प्लूम्यूल से बनती हैं। तो ये हुआ हमारा एपिजियल जर्मिनेशन। एपिजियल जर्मिनेशन का मतलब हाइपोकोटाइल इलोंगेट करेगा और कॉटलिडन सॉइल के सरफेस से ऊपर आ जाएगा। तो ये हो गए हमारे एपिजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन के बारे में। कॉटलिडन इसमें फर्स्ट लीव्स बनाता है लेकिन ट्रू लीव्स नहीं बनाता है।
ट्रू लीव्स कौन बनाएगा? हमारा प्लूम्यूल बनाएगा। अब हम थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर कि मेज़ में कैसे हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। मेज़ में क्या होता है कि जो कोलियोप्टाइल होता है, जैसे कि जो कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा दो प्रोटेक्टिव शीट होती हैं। कोलियोप्टाइल प्लूम्यूल के ऊपर की शीट होती है और रेडिकल जो होता है वो कोलियोराइजा जो होती है वो रेडिकल के ऊपर की शीट होती है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो मेज़ ग्रेन होगा ये भी वाटर इम्बाइब करता है, अपने अंदर लेता है और स्वेल करता है। फिर उसके बाद रेडिकल कोलियोराइजा को पियर्स करते हुए बाहर निकल आता है और रूट बनाता है, प्राइमरी रूट्स बनाएगा। लेकिन बाद में हम क्या देखते हैं कि ये जो रूट्स हैं ये ख़त्म हो जाती हैं, ये डाई हो जाती हैं और उसके बाद जो स्टेम का बेसल पोर्शन होता है उससे नई रूट्स अराइज होती हैं। तो इस तरह से मेज़ में होता है। अच्छा, प्लूम्यूल भी ऐसे ही कोलियोप्टाइल को पियर्स करते हुए निकलता है और पूरा का पूरा प्लांट बनाता है। तो ये हो गया हाइपोजियल जर्मिनेशन इन मेज़। अब बात करते हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन आप देख लीजिए एपीजेल और हाइपोजेल में। यहाँ पर आपने देखा है, ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये देखिए ये हो गया सीड, उसके बाद इसमें रेडिकल और हाइपोकोटाइल दिखाया गया है, हाइपोजेल जर्मिनेशन है। एपिकोटाइल ऊपर की तरफ इलोंगेट कर रहा है, हाइपोकोटाइल वैसा का वैसा ही है। फर्स्ट लीव्स बनी, एपिकोटाइल इलोंगेट किया और ये प्लांट बन गया। अब एपीजेल की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर एपीजेल में हाइपोकोटाइल इलोंगेट कर रहा है, कॉटलेडन ऊपर आ गए और कॉटलेडन ऊपर आने के बाद देखिए सॉइल के आप ऊपर चले गए और यहाँ पर फर्स्ट लीव्स बन गई। सो दिस वाज अबाउट द टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। थैंक यू।